रिमेंबर वन थिंग, हैशटैग पीपल आर गुड। लोग अच्छे होते हैं। आपका कस्टमर आएगा ना, अंदर आएगा, मैं आपको 400 रुपए दे दूंगा। अगर उसका आगरा राजस्थान वगैरह का ट्रिप बनाऊंगा मैं 3-4-5 हजार का, वो होगा तो उसका भी आपको 5% मिल जाएगा, लेकिन आने के आपको पर्ची मिल जाएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी, वो बसेस जयपुर आगरा वगैरह में सबसे बड़ी दुकानों में लगती थी। सिर्फ वो दुकानों में लगने की उनकी 5 करोड़ की फीस है। Hi, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? Every business, any single entrepreneur, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो, every entrepreneur says that we grow through referrals. PNI का पूरा नेटवर्क ही referrals के ऊपर बना हुआ है। multi-billion dollars worth of referrals happen. So how many people are interested in learning about how referrals happen? I'm into health and wellness business. So when I heal someone, no, like with the weight loss or with some hormonal issues, they have a social taboo to say it to their friends that I underwent a treatment or something, and they're not happy to give their testimonial to me. First of all, always get that particular testimonial written on a text. Maybe not their name, but simply at least written on a text. They can give their at least first name, number 1. Okay. And then what you can do is, once you, let's say you take 50 testimonials written. Okay. That's fine. I totally get that. And then you tell them your name is not there completely. Okay. Your name is not there completely. Okay. And now I'm going to use it on social media. Okay. That's number 1. Second is, they are not comfortable to share their experience. I have dealt with this kind of case. This was about, I remember, there's a client of mine, Shraddha. She was actually doing a marriage coaching. Again, the same problem, not something very discreet. They cannot share the real life example. But what they did was, what we actually did was, in that case, they might not share their experience, but they can share, let's say, if I took your service and I'm happy, what I will do is, I can say that I know someone who took her service, okay, and this is what she offers. And this is something you have to communicate a bit. Tell them that, you don't have to take your name, but you can simply say that I know someone who took this service and these were their results. But make sure you condition them to at least give you a written testimonial. It could be, let's say, my name is Sarthok Singh, so it could be Sarthok S. Okay, simple. Okay. All right. And if not the name, at least the results. That's fine. And you can use this as your advantage in your business. That you can simply. This is a copywriting thing that you can do. That people are not comfortable to share their discrete results. Yet I get referrals because they're so delighted with my service. They give me referrals in a discrete manner. This is how they do it. Okay. You can also communicate this. This is something that you can do in your advantage. Okay. Yeah. So Sarthak, my question, basically I have a toy rental business. So basically I provide branded toys, books, games and puzzles for 1 to 12 years kids. Okay. So my question is like, if I wanted to collaborate with other businesses, like their target audience is similar like me. So they are like cake shop where they are selling birthday cakes, or like event planner where they are contacting birthday party, or like birthday decoration. Right. So this kind of, or the preschools, right? Because they have the similar audience, but they are not directly competing with me. So if I'm going to collaborate with them and get business from them as a referral, so what kind of approach I can do them so that it will be a win-win situation for both of us? There are multiple ways to do it. First, be clear about if you want to do a joint venture. A joint venture is actually, I call it referrals on steroids. Okay. So basically what you can do is, so it's very clear. So in fact, if I give you an example, I did this particular referral system for someone, just try to understand this. I did this for someone who was an expert in improving the kids' handwriting. Okay. It is in the education industry. Then again, in the education industry, there are tuition centers who are just focusing on बच्चे का पूरा course complete कैसे कराना है. Okay. So these two were clubbed together. They get the customers, the kind of customers he's actually looking for. Okay. He was anyway already serving it, but the customers are already there in the tuition centers. And this guy got a cut
on that particular service that he was offering, and it was a win-win situation. Because why it was a win-win situation? Because the students who are studying, they need to write the paper in a certain way so that they can they can score a higher mark. So the service, both of them, they needed it. Okay, so basically either you can define a particular cut, that's number one. I think it will work wonderful. If that is not the case, then what you can do is you can tell them that you can put some money. I don't recommend putting money upfront, but I'm just saying you can just simply say, hey, you know what, let's exchange the data. Okay, let's exchange the data, or we can work together on the data. Okay, if you have a team to I don't know if you have a sales call team to make a call. Okay, so then you can put together the data, and then you can pitch your particular product or service, and every time you make a sale, you give them a particular commission. Or third is you combine their service with your service. Okay, because if they are serving the same customers, you are also serving the same customers, you can also, maybe you can club this particular product or service and sell it to your customers as well, or approach the customer in a different way, so that you start generating revenue through this. Okay, but again, the point that we are missing is we want them to make some effort. Okay, all right, we want them to make an effort. For them, the best thing would be the joint venture system in this case. Joint venture or incentive. Okay. For them, you have to tell them. For them, you have to tell them that you reach out to them, and Amit, just remember this: in joint ventures, if you're doing this, just don't be limited to one particular service provider, क्योंकि केक्स प्रोवाइड करने के लिए कमी तो है नहीं मार्केट में. ठीक है, आप 50 लोगों के पास जाओ. Okay, I've done this successfully. I'm telling you. You go to 50 people, 20, let's say 30 people would be interested, 20 will say yes, and finally you will make a deal with 7 people. You only need these 7 people. Okay. 6-7 people, and they will do the work for you, and obviously you'll pay them the commission, and always have a simple, let's say, internet-based system to track commission and everything. Make sense? Yeah. Because the idea is I don't want you to make the effort, I want them to make the effort. We want to leverage other people. Okay? Yeah. Okay, guys. So the thing is, I wanted to also give my perspective to Chaitra. Chaitra, I understand a lot of people have a problem being talking about their health and personal body weight issues and everything. When you approach somebody by saying that, do you know that the pain that you were in for many years that was solved by my program in a few months, there are many people who are still going through that pain. There are many moms, many dads who are still crying to sleep, unhappy. And I feel it is your and my duty to be able to help them get over this pain. For that, I have 2 options for you. A video testimonial telling people how your life changed and your pain was taken away. Secondly, if you're able to give me a text testimonial, both of them will help people. Remember one thing, #people are good. लोग अच्छे होते हैं. You have to talk to their hearts. दिल से उनसे बात करो. People who like to help, and you will definitely get your testimonials. Next, for Amit, इंटरनेट के आने से पहले सारा इकोसिस्टम ही रेफरल्स पे चलता था. दुकानदार बाहर वाले, हर दुकान के बाहर इंडिया में, बाहर हर रेस्टोरेंट के बाहर इंडिया में एक पान वाला होता है. वो पान वाला, और उसका पान वाला कहता है, सर तो खाना खा के निकलेंगे, मेरा पान खाएंगे. वो कहता है, तो उनकी आपस में होती है, ठीक है तो मुझे 20,000 महीने का देना, पान का ठेला वहां लग जाएगा. राइट. उसके बाहर वो पॉपकॉर्न वाला 6 बजे खड़ा होता है. उसके बाद उसको अलाउड नहीं होता क्योंकि खाने का टाइम होता है. 6 बजे से पहले रेस्टोरेंट में कोई नहीं आता, तो वो अपनी जगह पॉपकॉर्न वाले को दे देता है. तो आप देखो, हर जगह हमारे हिंदुस्तान में इकोसिस्टम रेफरल्स का तो बना ही हुआ है. तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है. 8-10 लोगों की लिस्ट बनाइए जो आसपास हैं, जो टॉय के, आपने बोला बेकरी है, शॉप, केक, बर्थडे केक्स देते हैं. बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो. ऐसे 8-10 लोगों की लिस्ट बनाओ और उनको बोलो कि मैं आपको पर डील के ऊपर एक, आप वो पर्ची लगा के मेरे को देना, और 24 आवर्स के अंदर मैं आपकी कमीशन साथ के साथ रिलीज करूंगा. 10 लोगों को पार्टनर बनाइए, 100% चलेगा. क्योंकि जो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उसको एक केक में जितना पैसा नहीं बन रहा उतना तो आपके रेफरल में बन जाएगा. तो वो क्यों नहीं बोलेगा? 100% बोलेगा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. आप पहले एक ड्राइंग बना दीजिए कि बीच में आपका प्रोडक्ट है, उसके आसपास कौन से 10 प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं, एंड देन गो एंड मीट एवरीबडी.
और साथ के साथ जब आप उनको पैसे दोगे ना, तो उनको उसकी बहुत जल्दी आदत हो जाएगी, यार ये तो सिर्फ बात करने के पैसे मिल रहे हैं। बहुत साल पहले जब मैं ट्रैवल एजेंसी चला रहा होता था, तो हमारे को क्या था कि फॉरेनर्स चाहिए थे, क्योंकि फॉरेनर्स ज्यादा पैसे देते थे। तो दिल्ली में आनंद बस अड्डा था, आनंदपुर बस अड्डा था, दिल्ली में रेलवे स्टेशन था, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट था, कनॉट प्लेस था, कुतुब मीनार था, ऐसे 11 सेंटर्स थे दिल्ली में, 11। उन 11 सेंटर्स पे मैं हर हफ्ते जाता था, हर बुधवार जाता था, और सबसे मिलके सबको छोटी छोटी पर्चियां देता था, ऐसे करके पर्ची कि ये आपकी है, इसमें 1000 रुपए लिखता है। मेरे हाथ से लिखी होती थी, 10 पर्चियां देता था हर जगह। बस में वो होते हैं ना जो कहते हैं दिल्ली 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 दिल्ली, वो कंडक्टर को, रेलवे स्टेशन पे कुली होते थे ना, कुलीस को मैं देता था, और अपना एयरपोर्ट पे जो टैक्सी वाले होते थे काली पीली, उनको देता था। और वो मेरे हाथ के लिखे हुए थे, तो मेरे को पता है, मैं कहता था इस पे 1000, किसी पे 800, किसी पे 500, जो भी था। और मैं उनको बोलता था, आप मेरे होटल में आना, मेरे डैड के होटल में आना, वहां मेरी ट्रैवल एजेंसी है, आपका कस्टमर आएगा ना, अंदर आएगा, मैं आपको 400 रुपए दे दूंगा। अगर उसका आगरा राजस्थान वगैरह का ट्रिप बनाऊंगा मैं 3-4-5 हजार का, वो होगा तो उसका भी आपको 5% मिल जाएगा, लेकिन आने के आपको पर्ची मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी शॉपिंग शोरूम में जाते हो ना, हैंडीक्राफ्ट शोरूम दुनिया भर में, चाहे वो न्यूयॉर्क हो या जयपुर हो या जबलपुर हो, जब भी आप देखते हो टैक्सी वाला किसी फॉरेनर को बोलता है, सर 2 मिनट आप इस दुकान पे रुक जाइए, चाय पी के आ जाओ, उसको अंदर जाने की पर्ची के पैसे मिल जाते हैं। रेफरल, ये दुनिया भर में पहले से चल रहा है और बहुत ही सक्सेसफुल सिस्टम है। दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी ट्रैवल एजेंसीज लाखों करोड़ों रुपए इस चीज के कमाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी, उनके पास 300 से ऊपर बसेज हैं, उनमें सिर्फ फॉरेनर्स आते थे कोविड से पहले, अब तो नहीं आ रहे बहुत देर से। वो बसेस जयपुर, आगरा वगैरह में सबसे बड़ी दुकानों में लगती थी, सिर्फ वो दुकानों में लगने की उनकी 5 करोड़ की फीस है। जैसे हम 500 दे रहे हैं, वो एक उन्होंने अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स कैलकुलेट करे थे, इतने कस्टमर हमारी दुकान में आएंगे तो इतनी सेल हो जाएगी, और उस हिसाब से 5 करोड़ उनको पहले ही एडवांस मिलता है कि तुम्हारी 300 बसेज आज आ रही है इस साल, उसमें यूरोप के कस्टमर्स है, यहाँ के ज्यादा पैसे खर्चते हैं, उस हिसाब से these customers will come। तो आपका आइडिया इज 100% करेक्ट, बिना सोचे समझे कल आप चढ़ जाओ इसके ऊपर।